Assalamualaikum everyone, it's Annie Arslan and one more time I'm with you. आज हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करेंगे. Why I said interesting only? Because interest is the first key of learning. So if we do not have interest, we cannot learn. And if we cannot learn, we cannot grow. There is always a direct proportion. So we are going to discuss something about quality today. There are two reasons to choose this subject as a matter of discussion for today's session. The first one is, which is really very logical and basic, there is no perfect definition of quality. And the second one is, few days back I encountered a question. We can just give a exemplary name, Mr. A. So Mr. A asked me, Annie, how can you define quality of learning and development of an organization? Now, we had discussion of nearly 20 to 25 minutes or approx half an hour based on this subject. And later I realized this is not something which he only asked me, this is something which is very mandatory for all of us to ask from ourselves. Because हम सबको, we all have to grow in our lives, and as I promised you that we would be coming up with the different tools and techniques in the performance booster bucket. So मैंने पूरी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए then I thought कि how exactly successful people do feel about quality and how do they define their quality of their functions, their products and their performances. So then I came up with the idea that we all have to learn more of it. We all have to learn quality in a very detailed manner. तो आज इस सेशन में I am going to kill or I am going to rewrite few of the definition of the quality. कुछ assumptions हैं quality को लेकर. I must say कि जैसे common mindset. For example, common mindsets do perceive quality in a certain manner. So there are few assumptions which common mindsets do have, and I would be defining you with the expert or success mindset that how quality should be defined as, should be understood as, and should be taken benefit from. तो पहली assumption जो quality को लेकर लोगों के ज़हनों में है, वो क्या है? Quality का नाम दिमाग में आते साथ ही जो पहला विंडो पॉपअप होता है, जो कुछ खास अल्फाज जहन में आते हैं, वो क्या है? एलिगेंस, गुडनेस, extraordinary, distinctive characteristics. These are the common mindsets. That's how they perceive and define quality as. While growth mindsets, success mindsets feels what they feel about quality. Quality is nothing but conformance of your requirement. तो मसला क्या आता है कि हमें सबसे पहली स्टेज पे अपनी रिक्वायरमेंट का सही तरीके से पता नहीं होता. What exactly we want, we don't know it. And once we don't know what exactly we want, we are never satisfied. Make sense? तो क्यों सक्सेसफुल लोग जो हैं वो खुश रहते हैं? Because they know exactly what they want. And when they know where to reach, what to get, they get it. They celebrate their success and then reset the parameter, the criteria of their requirement. So that's how they scale up their requirement and that's how they achieve them. And once they achieve their targets, once they achieve things that actually define their requirements are, so they feel good about their success too. And the first place, the first definition, the first assumption of quality is, it's not about goodness, it's not about extraordinary, it's not about being distinctive. It's all about conformance to your requirement. It is equally applicable to all functions, to all roles, to all positions, to everyone, no matter आप प्रोफेशनल बात करें, no matter आप पर्सनल बात करें. कहीं पे भी अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट का सही से पता नहीं है, तो सबसे पहले वो पता लगाना इम्पोर्टेंट है, because we are trying to shift our mindsets from common to growth mindsets. The second is, quality is intangible. We cannot measure it really. Now, this is something like, how can you measure quality? Quality is in the eyes of beholder. Quality is, you can only sense it, you can only feel it. You cannot exactly measure it. That is again another common mindset.
Now, how successful people do believe about quality? They feel quality can be measured, but if not directly, then it can be measured with the cost of non-conformance. Now, what is exactly non-conformance is? To understand it a bit more better, for an example, if I ask you, or if I'm asked maybe, how to define the quality of my hand, तो इसके दो साइड है ना, मेरे हाथ के दो साइड हैं, the front and the back, right? Or maybe back and the front, whatever you want to call it as. तो जो मेरा top layer है, you can beautify it like maybe I have been beautifying it with a moisturizer, creams, lotions and whatsoever, or maybe with some accessories, with some nail pens or whatsoever. So there's the front layer of it. But if I neglect the inner side, if I keep it as is, if I get scratches here, if my skin is peeling off, it is very rough, then do you feel the whole hand is of a good quality? And if it is one product, can you feel it's like something meeting the requirement? Because there are certain things which are must and compulsory regarding any product, any function, any performance. तो इसी तरह से जब आप अपनी हैंड की क्वालिटी को डिफाइन करेंगे तो up to a certain level you will be checking the front part and also the inner palm side to define it as if it is of the required quality or not. Same as the kids. When we talk about the quality of the functions and the roles, let's suppose all the stuffs like scrap percentage, damages, detention charges, or maybe overstocking. So ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम अपने फंक्शंस में सुनते भी आए हैं और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे नॉन कन्फॉर्मेंस की कॉस्ट हमें बताएगी व्हाट एग्जैक्टली वी आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और वेयर डू वी स्टैंड. अगर हम बात कर सकते हैं किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट, लेट्स सपोज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो हाउ यू डू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ IT प्रोफेशनल or IT department, that how much they are providing you the services which are being followed by good organizations or which are being followed by worldwide organizations. So whatsoever you are lacking behind, the cost of that non-conformance would be giving you exactly what the cost of quality of your functional roles are. Like अगर मैं बात करूँ फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इसको भी एग्जाम्पल से समझ लें कि देयर वाज अ टाइम जब हमारे पास देयर वाज अ टाइम जब हमारे पास PTCL हुआ करते थे और PTCL से पहले ख़त का सिस्टम हुआ करता था. तो जब वी यूज्ड टू राइट लेटर्स टू कम्युनिकेट व्हाट इज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन इट वाज लेटर रिप्लेस्ड विद telephonic conversation and later with mobiles and now with 3G, 4G or whatsoever other mediums are. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई शख्स अभी तक खत लिखे तो वो क्या कहलाएगा? वो आज की तारीख में बेवकूफ़ कहलाएगा. लेकिन खत लिखना तो was the first, you may call it the ancestor system of taking technology in birth. But now as the technology is in place, so whatever, if someone is writing letter, तो जितने भी दिन ज़ाया हो रहे हैं उस लेटर को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जो कम्युनिकेशन डिले आ रहा है, जो मैसेज डिलीवरेंस डिले आ रहा है, that would be the cost of the non-conformance. So either you would be ending up, if you are not up to the quality parameters, so either you would be ending up with something, you may say with some damages or with some compromises in terms of your quality system. So if someone asks you how quality is defined and if you are not able to answer with the right 2 plus 2 is equals to 4, then there is another way of defining quality with the successful mindset, and that is cost of non-conformance. So we have not only to be very sure exactly what we are performing, but we have to be very sure what we are lacking in, where we are lacking in, because that exactly the cost of non-conformance, and that is equally important to measure the quality of what you are doing right now. तीसरी assumption है of the common mindset, and they say quality is high priced. क्वालिटी की चीज़ बनानी है
पैसे ज़्यादा डालने पड़ेंगे। क्वालिटी के फंक्शंस लाने हैं, पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्वालिटी इज पॉकेट हेल्पिंग। यू वांट टू शॉप एनीथिंग ऑफ गुड क्वालिटी, यू हैव टू इन्वेस्ट मोर। कॉमन माइंडसेट। हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस बूस्टर बकेट की, हम बात कर रहे हैं अपने रोल एनहांसमेंट्स की, अपनी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की। सक्सेस माइंडसेट सजेस्ट, ग्रोथ माइंडसेट सजेस्ट, ये जो assumption है ये गलत है। एंड दे से क्वालिटी इज एब्सोल्युटली फ्री, नो मैटर विच फंक्शन यू बिलोंग टू, क्या आपका जॉब रोल है, आप क्या काम करते हैं। अगर आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी फ्री है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी सिर्फ उस वक्त फ्री है when you do it rightly at the first time. With an example, if I explain it bit more better way. If I'm going to cook some food, और खाना बनाने के लिए of course उस खाने के अंदर कुछ ingredients होंगे. Now what I do, I miss some of the steps or I overlook some of them. Now by the end, as a resultant taste, either I would be compromising on the taste of the food, or I would be trying to fix it with some additional ingredients or some additional steps. This example exactly can be applied to all of the functions, to any of the areas you name. कैसे? कि या तो आप अपनी क्वालिटी को एज पर रिक्वायरमेंट लाने के लिए, जैसे मैंने टेस्ट को अपनी रिक्वायरमेंट में लाने के लिए उसके अंदर कुछ या तो चीज़ें आखिर में ऐड करी, या फिर उसमें कुछ स्टेप्स ऐड करें, उसका कुकिंग टाइम बढ़ा दिया, उसमें XYZ और चीज़ें डाल दी ताकि वो जो टेस्ट मुझे चाहिए वो मुझे मिल सके। सेम एज द केस आपके प्रोडक्शन फ्लोर पे और मे बी इन योर सर्विसेज डिपार्टमेंट, इफ़ यू डू नॉट डू इट rightly at the first time, you are going to end up either with a compromised quality or you would be ending up with some more steps to get the desired quality. So quality is absolutely free. You just have to add on your time, money and energy if you are not putting the right efforts from the very first time. एक चीज़ मैं बहुत यहाँ पर क्लियर करूँ, this is not, quality is not something for the कि मैं बात करूँ प्रोडक्शन यूनिट्स की और डेमरेजेस की और समथिंग विच इज़ रियली नोटिसेबल। अगर आप कोई रिपोर्ट भी बना रहे हैं एंड इफ़ यू आर नॉट पेइंग राइट अटेंशन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, यू वुड बी ईदर एंडिंग अप विद मोर ऑफ द टाइम यू वुड बी पुटिंग इट इन और अ कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी। तो किसी भी जगह पर अगर आप इसको assumption को फिट इन करेंगे, यू कैन फिक्स इट, यू कैन चेक इट। हमारे नॉर्मल डेली रूटीन में वीकली, मंथली जो भी रिपोर्टिंग सिस्टम है, मैं क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे बात करती हूँ और नॉर्मली आई जस्ट ट्राई टू गेट टू द पॉइंट वेयर एवरी सिंगल इंडिविजुअल कैन को रिलेट व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से। तो आप अपने जितने भी काम कर रहे हैं उनमें से जो जो काम आपने बहुत ध्यान से पहले बार में ही अच्छे किए होंगे, वहाँ आपको उसकी क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन अलग नजर आएगी। एंड दैट इज द assumption which successful mindset do kill by telling you quality is absolutely free only if you go right at the first time. Now, fourth assumption about quality. Quality problems do initiate or originate with the workers. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मल्टी हैंड जॉब है, राइट? तो किसी भी जगह पर जहाँ पर मोर देन वन हैंड्स आर इन्वॉल्व इन गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। आसान करने के लिए प्रोडक्शन यूनिट की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन के लोग या वर्कर्स पे जाकर क्वालिटी को मैनेज करना मुश्किल है या वहीं से सारे प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होते हैं, तो समझ लीजिए कि ये कॉमन माइंडसेट आंसर है, क्योंकि सक्सेसफुल पीपल डू बिलीव दैट क्वालिटी और द प्रॉब्लम डू ओरिजिनेट एट द डेवलपमेंट स्टेज। जब आप उसको डेवलप कर रहे हैं उस वक्त, और या आप उसको प्लान कर रहे हैं उस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बट वी ओवरलुक देम। नाउ अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द फ्लोर मैनेजमेंट और फ्लोर प्लानिंग। इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल। मैं अपनी बात करूँ, मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट का डाटा बना रही हूँ, पूरे साल की रिपोर्ट कंपाइल कर रही हूँ,
या किसी खास मकसद के लिए कोई खास मे बी फाइनेंशियल एनालिसिस कर रही हूँ, at the time of planning, at the time of development, if I'm not putting my all right efforts, I'm going to either end up with the not right, so right data, or maybe I would be ending up with a cluster of information which really not of that good use, or maybe I would be coming up with something even more confusing कि ये किस तरह का डाटा है मुझे समझ नहीं आ रहा. तो when you are extracting your data, you have to be really sure what you are going to extract. तो मैं दोनों एग्जाम्पल्स इसलिए देती हूँ so we all can understand this is not something only for the production guys, this is not something only for XYZ people, it is equally applicable to every single individual no matter making a basic Excel sheet. तो अगर वो डाटा आप बना जो रहे हैं किसी न किसी इस्तेमाल में आना है और वो इस्तेमाल आपको सही तरीके से प्लानिंग के टाइम पर नहीं पता, तो believe me or believe me not, with a common mindset you would be either calling someone else for the responsible for this, or you would be either ending up with a poor quality product or poor quality report. The fifth one, last but not the least, and the fifth is that is something really close to my heart. People, common mindset do believe that quality is not my responsibility. Quality is responsibility of particular department. They are named as quality controllers. तो common mindset का कहना ये है कि quality belong करती है उन experts से जो quality को अच्छी तरह समझते हैं, जबकि successful mindset का कहना ये है quality is individual's responsibility. That is something which everyone has to label as in whatsoever the other label you are putting or having on your shoulder. Quality is your responsibility. Quality is not the responsibility of your boss. Quality is not the responsibility of your colleague. Quality is not the responsibility of your another department. Quality is your responsibility. तो जितने लोग ये समझते हैं कि हमने तो काम करके दे दिया, अब गलतियाँ निकालना हमारे बॉस की जिम्मेदारी है, वो यकीनन कॉमन माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं. It is as simple as that. Quality is something your entire responsibility. तो बिल्कुल अगर बेसिक रूट पे जाकर मैं बात करूँ तो आपका जो काम है, अगर वो उस काम पर आप इस उम्मीद से हैं कि someone else would be analyzing that and giving you the right input कि उसमें मज़ीद क्या बेहतर होना है, तो maybe this is only the common mindset. With the success mindset, quality is your responsibility. By the end of the day, what I answered him same. I answered him, अब आप इसको सेगमेंट कर लें जो मैंने उनको जवाब दिए जिसने मिस्टर ए को बहुत हद तक सेटिस्फाई कर दिया. I answered him, you want to check what exactly the learning and development of my organization is putting value in. You can check and study few more organizations which are a bit more behind in learning and development. तो जब आप उनके कल्चर में और हमारे कल्चर में फ़र्क देखेंगे, I make it very clear. I'm not trying to defame anyone. I'm not even trying to give myself a higher rank and someone else as a lower rank. I must assure it. I simply mean it. We all, mashallah, are in the race. जितने भी institutes हैं, जितने भी organizations हैं, they are all in the same lane. Some are ahead, some are behind. That does not matter as long as they all are proceeding. So I simply mean to say कि जब two decades back अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन में HR के रोल्स में L&D was not so much into it, तो ऑर्गेनाइजेशंस की शेप कैसे हुआ करती थी और अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे इवॉल्व हो रही है. So at the times cost of non-performance gives you cost of doing. So exactly you have to check where you stand and you have to ask this question every single day by yourself so you all can grow. And that is how our performance booster bucket is shaping up as, because we only know the only tool to grow is learning. So happy learning and I wish you all the very best. Thank you so much. Bye. Allah Hafiz.